Hello everyone, welcoming you all in the live session by Apple Abroad Solutions. I am Mehek Bedi representing University of Northern British Columbia. Today I am here to attend Apple Abroad Solutions live Facebook session where we will be talking about the university in bit detail. Like we will be discussing about its program, its tuition fees and job opportunities. But before I start, we all know that COVID-19 pandemic is affecting all of us. But we should not let it stop from improving our minds, sharpening our skills and connecting with each other. Here in this case, we all are connected virtually. So before I start, this was about the journal information. Now let's start with the introduction. University of Northern British Columbia is a public research intensive university. We are located in Prince George City, which is not far away from Vancouver. It is just 1 hour flight from Vancouver. Now, according to Times Higher Education World University Rankings in 2017, UNBC is featured in the group ranked between 801 to 1000, the only Canadian university of its size to be included in the rankings. We are top 3 Canada according to Maclean ranking for more than a decade. We are very well known as Canada's Green University. We are also top 50 Canadian Research University by Research Info Source. UNBC is also recognized as one of the British Columbia's top employers. This was about the general knowledge about UNBC. Now we will be moving forward about the history of UNBC. Now, University of Northern British Columbia was introduced as a community college. But looking at the overwhelming support from the people in North on 22nd June 1990, it was established as a university. In 1994, UNBC awarded its first 6 of what would be the thousands of bachelor degree, and this was the only university where Queen Elizabeth was a part of its official opening. So this is really true. So University of Northern British Columbia is the only university where Queen Elizabeth was a part of its official opening. Now moving further about the programs. But before I move to programs, I just want to highlight that the famous research universities such as University of British Columbia, Simon Fraser University and University of Northern British Columbia falls under the same category of research-based programs. So to start with, UNBC has more than 60 undergrad programs to choose from. And in order to know more about it, UNBC ने अपने programs जो हैं वो 2 portions में divide किए हैं. One is the competitive and other one is the non-competitive. So UNBC में 2 sections रहते हैं when you want to apply for any programs. So it is one is the competitive और दूसरा है non-competitive. So first हम बात करते हैं competitive programs की. Competitive first of all word से आप क्या समझते हो? So competitive का मतलब होता है competitive means जिसमें आपकी जो academics requirements रहेंगी उसकी efficiency थोड़ी high रहती है as comparable to general programs के लिए, इसीलिए इन्हें competitive programs कहा जाता है. इसमें हमारे पास रहता है bachelors in civil engineering, bachelors in environmental engineering and bachelors in health science. So first हम बात करते हैं bachelors in civil engineering की. So bachelors in civil engineering is all about infrastructure development, designing, manufacturing, and the scope can never be less for this course due to increasing requirement of such professional name of the degree. So अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में रहता है.
एंड द स्कोप ये कभी भी कम नहीं हो सकता है इसमें, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट कि एक बार बिल्डिंग बन गई तो उसके बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं होती है या उस पर रेनोवेशन नहीं होता है. सो यू डेफिनेटली रिक्वायर्स इंजीनियर्स फॉर दैट. Second is okay, moving forward, just want to explain you about the category जो इसमें streams subject streams जो इसमें required रहेंगी. That will be physics, chemistry, maths. So the required subjects which are in order the required subjects in order to apply civil engineering will be physics, chemistry, maths. Moving on to environmental engineering. It is all about the application of scientific and engineering principles to improve and maintain environment. The scope can never be less for this course as well, because due to the increasing requirement of such professionals is high due to the hazards effects of pollution. So if you are applying under environmental engineering, so you can get definitely lot of scope. And the required subjects इसमें रहेंगे physics, chemistry. Students with maths and bio background both can apply for environmental engineering. Moving on to bachelor's in health science. Now bachelor's in health science में आप health science क्या समझते हैं? Health science में आपका रहेगा, when you talk a term health science, this means that you would be studying about medicines related things, और आपके हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप इसमें डिटेल्स में पढ़ते हैं. सो इन बैचलर्स इन हेल्थ साइंस वी हैव बायोमेडिकल स्टडीज़. सो बायोमेडिकल स्टडीज़ में आप क्या पढ़ते हैं? जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज में आगे जाएं, जैसे फार्मेसी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, डेंटिस्ट हो गया, ये सारी फील्ड्स में जो जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो बायोमेडिकल स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. एंड उनको 120 क्रेडिट पॉइंट्स लेना होता है, बिकॉज ड्यूरेशन जो है पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की UNBC में वो 4 years का रहता है. जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं अपना ये 4 year डिग्री क्वालिफाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट दे कैन मूव फर्दर फॉर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज टू बिकम अ फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और अ डेंटिस्ट रिस्पेक्टिवली. एंड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स फॉर हेल्थ साइंस विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. This was about the competitive programs. Next is non-competitive programs. Now non-competitive programs को हम journal programs भी बोलते हैं. अब journal programs हमारे अंडर कौन कौन से आते हैं? जैसे बैचलर्स इन साइंस है, बैचलर्स इन कॉमर्स है और बैचलर्स इन आर्ट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स इन साइंस. ना बैचलर्स इन साइंस में हमारे पास बहुत सारे यूनिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है. We have a bachelor's in computer science and biochemistry and molecular biology. There are many programs जो bachelor's in science के अंडर आते हैं. Just want to talk about bachelor's in computer science. Ideally bachelor's in computer science जो है that is for science background के बच्चे या फिर commerce background के students apply कर सकते हैं. बट अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और वो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता है, सो ही शुड बी दे शुड हैव अ नॉलेज अबाउट देयर 10th grade मैथ्स. क्योंकि जब आप बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं, सो यू हैव टू देयर इज अ सब्जेक्ट मैथ्स ऑल्सो. So there is a requirement of maths in computer science. So if the students who are willing to apply under bachelor's in commerce, sorry, in bachelor's in computer science, and they are they are in a category of art stream, so they should know at least 10th level maths. Then only they can apply for bachelor's in computer science. Next is bachelor's in computer. This was bachelor's in science. Now we will be moving forward for bachelor's in commerce. अब बैचलर्स इन कॉमर्स में भी हमारे पास बहुत से यूनिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे बिजनेस है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है.
लाइक ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम MIS बोलते हैं, सो व्हाट इज बीन कंसिडर्ड इन दिस इज like this program is ideally for the students for commerce background. लेकिन अगर कोई science background का student is willing for applying under MIS program, so he or she can also apply. The condition is जो MIS program अगर आप apply करना चाहते हो, अगर आप science stream के हो, तो you should have computer science in your grade 12. Then you can apply for management information system. So what is management information system? So management information system is about, you know, business ethics and technology. So while pursuing this degree, you would be able to know about the business ethics and even about the information technology as well. Moving on, about bachelor's in arts. Now under bachelor's in arts, again we have many unique programs. Like we have anthropology, we have political science, we have economics. Like students who are willing to apply, you know, BA in psychology. So in UNBC, if you want to apply BA in psychology, so particular straight away subject is not there, BA in psychology, but you can apply under anthropology, which is somewhat related to psychology. So this was all about the programs. So just want to add on about the intakes also. For competitive programs, we have only one intake, that is September intake, and for non-competitive programs we have January, May and September. And just want to clear the confusion, like what all subjects, what all programs will be there in September intake, and what other programs will be there in the other Jan, May or September. So see, in your, if I talk about the September intake, in September intake you will be able to get, you know, all programs are available. Like your science stream, your bachelor's in science is available, bachelor's in commerce is available, and bachelor's in arts is available. So plus, because it is a competitive program section, so over here you will be getting you will be able to get health science, bachelor's in civil engineering and bachelor's in environmental engineering. So this will come in your September section, okay. But if I talk about in your January and your May section, so in January and May you would be able to get only programs known as journal programs, means bachelor's in science, bachelor's in commerce and bachelor's in arts. So I hope that you are clear about the programs, which program lies in which intake. Moving on to our application fees. Okay, before moving to the application fees, let me discuss about the most important thing, that is the admission requirement. So when you are applying for competitive programs, we require 65% overall and no subject less than 60. So no subject less than 60 means in your core subjects. So in your core subject, no subject should be less than 60. And for non-competitive, we have 55% overall and no subject less than 50. So again, when I'm saying no subject less than 50 means you should be, you know, your program, I mean, in your core subjects, it should not be less than 50. So this was the admission requirement for competitive and for non-competitive. Intakes I just have cleared up. Now we will be moving to the English efficiency requirements. So under UNBC, we are accepting IELTS, we are accepting TOEFL, we are accepting Duolingo, we are accepting Cambridge English test, and we are also accepting TOEFL as well. So for IELTS, we require 6.5, not less than 6. We are also accepting online IELTS as well. We are accepting Duolingo, as I just discussed. The points which we require will be 105 points. For Cambridge English test, we will be requiring similar to 6.5, not less than 6. For TOEFL, we will be requiring 90 overall and no component less than 20. So this was about the English efficiency requirement. Now coming up to our application fees. Now for application fees, we have 125 Canadian dollars. Now this is the journal fees for undergrad programs. Moving on to our
tuition fees for competitive and non-competitive. Now for competitive programs आपका 1 year का फी रहता है 23,117 कैनेडियन डॉलर्स, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस 3 months का इंक्लूड होता है, बस पास और आपकी बुक्स फीस. फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स के लिए आपकी ट्यूशन फीस 1 year की है 25,165 and that will include your health insurance again for 3 months, आपका bus pass and your books fee. So this was about your tuition fee structure. Now moving on to our accommodation. University of Northern British Columbia is providing you on-campus accommodation, जिसकी जर्नल फीस जो है वो $150 से $250 वेरी करती है एंड ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द अकोमोडेशन. दिस ऑन कैंपस अकोमोडेशन विल बी बुक्ड थ्रू द स्टूडेंट अकाउंट ओनली. Like we are not supporting for any off campus accommodation, but students की general help के लिए you can go on the website of UNBC. वहाँ पे UNBC की website पे you can see that there is an accommodation section जहाँ पे बच्चों के off campus accommodation के links provide किए गए हैं. So अगर if they require they can cross check, वहाँ पे links को वो cross check कर सकते हैं and they can communicate with the further people. I mean links में contact numbers भी दिए होंगे, then वो बात कर सकते हैं, अपना off campus accommodation book करवा सकते हैं. So this was about accommodation. And yeah, I would like to add on this is like meal plans is there. Like आपको vegetarian non vegetarian दोनों टाइप का meal plan आपको मिलता है. Indian food भी मिलता है depending upon your wish list के according. आप the campus is really beautiful and people are very flexible over there. I mean जो आपके UNBC के जो staff members हैं या आपकी जो faculty है वहाँ पे, they all are very flexible. So now I believe that you must have learned something about UNBC. And before I forget, I would like to highlight USPs of UNBC. Like what is the reason behind आपको UNBC क्यों choose करना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, UNBC जो है वो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है. सेकेंडली इसकी रैंकिंग्स, अगर आप इसकी रैंकिंग्स देखें तो UNBC जो है लास्ट 11 ईयर्स से टॉप 3 पोजीशन में है फॉर अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए. एंड हम लोगों ने लाइक वी आर टॉप 50 रिसर्च यूनिवर्सिटी में भी हम टॉप में आते हैं. So this is the this is how we are able to maintain ourselves in rankings. UNBC जो है is a public university and being a public university आपको जो offer letters मिलता है that is just 5 to 10 working days में आपको offer letters मिल जाते हैं. Next unique point is we are accepting the applications without maths as well. Now let me discuss with you how this can be applied. जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं UNBC में और वो पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ करते हैं जहाँ पे मैथ्स का रिक्वायरमेंट रहता है, सो उस क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन को मॉनिटर करेंगे 10 के बेसिस पे. आपका 10th का जो मैथ्स का ग्रेड है 60 होना चाहिए. हम उसके बेस पर आपका एप्लीकेशन मॉनिटर करते हैं. फिर उसी बेसिस पर आपको एप्लीकेशन आप यू गेट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन UNBC. नाउ once you got your visa and you are in the university, what you have to do is वहाँ पे आपका एक प्रोग्राम होता है that is Math 115. वो आपको सेमेस्टर के साथ ही करना होता है. So Maths 115 will be done along with your semester only. ये 2 to 3 weeks का प्रोग्राम होता है जिसको आपको आपके सेमेस्टर के साथ करना होता है. एंड जो ट्यूशन फीस है मैथ्स 115 की दैट इज इंक्लूडेड इन योर ट्यूशन फी ओनली. जो भी इसकी फी स्ट्रक्चर रहता है मैथ्स 115 का वो आपकी फीस में इंक्लूडेड ही होता है. एंड ये जो मैथ्स 115 है ये सभी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट होता है जो भी बच्चे कोई ऐसा प्रोग्राम चूज करते हैं जहाँ पे मैथ्स का रिक्वायरमेंट है और उन्होंने 12th स्ट्रीम में मैथ्स नहीं लिया है. सो इन दिस वे वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस विदाउट मैथ्स एज वेल. नेक्स्ट इज डिस्टेंस एजुकेशन.
वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, या जैसे आप लोग प्राइवेट बोर्ड भी कहते हैं. सो प्राइवेट बोर्ड हो, डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने 12th पास आउट किया है तो वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस. हमें ट्रांसक्रिप्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, अदरवाइज वी एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस. वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस ऑन प्रिडिक्टेड स्कोर्स एज वेल. जैसे अभी अभी इंडिया का लाइक सिनेरियो है, सीबीएसई बोर्ड्स या अदर स्टेट बोर्ड्स के भी रिजल्ट्स अभी ग्रेड 12 के नहीं आए हैं. सो ऐसी कंडीशन में व्हाट वी कैन डू इज, आपका जो प्री बोर्ड है, जिन स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड के मार्क्स को देखकर आपको यूएनबीसी में आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन. अगर आपको किसी स्कूल से प्री बोर्ड के स्कोर्स नहीं मिले हैं तो आप 10th और 11th के बेस पर अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए. नेक्स्ट इज वी आर अगर हम बात करते हैं फैकल्टी रेशो की, सो फैकल्टी रेशो यूएनबीसी की है 1:8. यूएनबीसी जो है वो इसमें बिलीव करती है कि हर स्टूडेंट को 1-to-1 इंट्रैक्शन मिले उनके ट्रेनर से, और they are able to clear their doubts more softly and smoothly. So that is the reason they are providing 1-to-1 interaction with the containing a less number of students in their classrooms. So 1:8 is the ratio. Employment ratio की अगर हम बात करें तो employment ratio is 81 to 84%. So 81 to 84% is the employment ratio UNBC की. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ही कम है. वी आर एक्सेप्टिंग दी बैकलॉग्स वी आर एक्सेप्टिंग, लाइक इट शुड नॉट बी मोर देन 5, इट शुड बी लेस देन 5. फर्दर अगर हम बात करते हैं बैकलॉग्स, आपको मैंने बता दिया. गैप जस्टिफिकेशन, यस, 2 to 3 years का गैप हम एक्सेप्ट करते हैं, बट ये गैप प्रॉपरली जस्टिफाइड होना चाहिए. तो जस्टिफिकेशन से आपको जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली जस्टिफिकेशन मीन्स. जस्टिफिकेशन का मतलब है कि वी रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ योर पेपर वर्क. लाइक सपोज किसी बच्चे ने 12th पास आउट किया, उसके बाद वो जॉब कर रहा था, 2 to 3 years का जॉब किया है. सो वी रिक्वायर अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट. सो इट शुड बी अ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन. या आपने कोई ट्रेनिंग की है, किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे थे आप, तो वो सब चीज़ें आपके गैप को जस्टिफाई करती है. सो यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट. लाइक अगर आपके गैप है तो आप वो डॉक्यूमेंटेशंस पूरे कीजिए, फिर आप यूएनबीसी में अप्लाई कर सकते हैं. The most important thing which you all would be like to know is about the opportunities in Prince George City. See, opportunities in Prince George cities are many. वहाँ पे बहुत सारी opportunities आपको मिल सकती हैं. जैसे there are many paper mills and pulp mills are there, chemical plants are there, sugar mills are there, oil refineries are there, restaurants are there. So part time option के लिए students को कोई दिक्कत नहीं रहेगी. Even you can get options in your campus as well, depending upon कि how flexible you are and what kind of opportunities are available at that particular time frame. But you can get some opportunities inside the campus as well. So this was all about UNBC. So if we have any questions, like I can answer your questions before wrapping up. Any questions coming up? लाइक जो स्टूडेंट्स जो ऑफ कैंपस रहते हैं या जो ऑफ कैंपस रहेंगे, उन लोगों को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज यूएनबीसी से बस जो है वो लीव करती है एवरी 15 minutes. सो द स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग ऑफ कैंपस, दे वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स. And UNBC is not only flexible in terms of academics, but yes, we have many activities running in UNBC. So there are many fun activities, sports things, and other fun activities are also running in UNBC. We are also organizing an education fair every year.
like September and January. So the students would be able to know more about their career while attending that education fair. So this is all about UNBC, and we are still open for September 2020, and we are also open for Jan 2021 for bachelor degree program. And we encourage our students to apply as we have limited seats left for this intake. One of the affordable cities and one of the reputable institution across Canada. Okay, what about the scholarships? Okay, Archana, we are providing you scholarship. You should have a percentage of at least 75 or above, and then we can check with the availability of the scholarships, and you can get scholarships in UNBC. So I hope you all have liked the exclusive live session of UNBC. Stay tuned with Apple Abroad Solutions to apply for September 2020 intake. Till then, see you. Take care. Bye-bye.